That means I can have a problem in which, see, my feasible region could be like एक constraint ये आया, एक constraint ये आया, और जो मेरा feasible region बना, मैंने randomly बनाया ये. This is my x2 axis and this is my x1 axis, and my feasible region is this, right? So that means this becomes the boundary, ये वाला, ठीक है ना? So I have this point, I name it A. I have this point, I name it B. Right? तो एक तरह से ये बन गया. So it's like an open structure like this. Right? So it's not bounded above. Right? So such a feasible region is called as an unbounded feasible region. That's obvious from the shape of the feasible region as well, right? But the problem is that, does unbounded feasible region always imply that the problem is going to have an unbounded solution? See, again, this is a very common problem in interviews. Question in interviews, we talk of two things: unbounded solutions and unbounded feasible region. Like this is an unbounded feasible region, right? And as in the case, you have seen that if your problem was maximization types, so supposing say this becomes your objective function, so as you move on in this direction, your objective function value will keep on increasing. As you keep on increasing your values of x1 and you keep on increasing your values of x2, your value of z also increases. So that means there is no bound. There is no bound on x1, there is no bound on x2, and hence there is no bound on z because it was a maximization problem. So such a solution is called as an unbounded solution, where there is no bound on the value of the objective function also. But in the same problem, if my problem was of minimization type, then see, if this is my objective function and if I bring it down, maybe this value, this point A, will give me the minimum solution. So though the region is still unbounded, but the problem has a solution. Okay, so unbounded feasible region does not always imply that the problem is going to have an unbounded solution. Okay, we can have unbounded feasible region with solutions also, optimal solution as well. Okay, but definitely an unbounded solution means that the feasible region is also unbounded. Okay, now again, this becomes a typical case. See, this is the third type of case that we can end up with. Like the first one was the one that we discussed when the problem had a unique solution. We got only one solution, right? Then the second case was when the problem had alternate solutions, and alternate solutions were how many? Infinitely many, right? Then now the third case that we have seen is the case when the problem has an unbounded solution. Okay, an unbounded solution will exist when we can increase the values of x1 and x2 up till any extent, and as a result the value of z also increases, right? Now the third case, the fourth case is like the last example that I gave you to try. उसमें क्या आ रहा है? There is no feasible region. ठीक है? If there is no feasible region, that means you are getting regions graphically. Your graphs are coming out to be something like it could have been like, जैसे मेरा एक constraint ये आया और दूसरा constraint ये आया और इसका ये वाला रीजन आ रहा है और इसका ये वाला रीजन आ रहा है. Right? So I have two constraints, but there is nothing in common between them. So basically, what does it mean? It means that there is no value of x1 and x2 that satisfies both the constraints simultaneously. यही मतलब हुआ ना इसका. So इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम कहते हैं, the system of equations is inconsistent. So जो दो हमारे पास आई solutions, वो हमारे पास उनकी solution exist ही नहीं करता, simultaneously कोई satisfy नहीं कर रहे. तो जब हमारे पास feasible solution ही exist नहीं कर रही, तो definitely optimal feasible कहाँ से आ जाएगी, right? So हमारे को optimal feasible लाने के लिए सबसे पहले condition क्या है कि सारे constraints
साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होने चाहिए। तो जब हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स ही सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो हमारे पास कोई ऐसा x1 x2 आ ही नहीं रहा कॉमन जो सारे कॉन्स्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करता हो, तो डेफिनेटली हम मैक्सिमम या मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू भी नहीं निकाल सकते। ओके, सो दिस बिकम्स द केस ऑफ नो फीजिबल सोल्यूशन। नो ऑप्टिमल फीजिबल सोल्यूशन एग्जिस्ट्स। और ये कब होगा? जब फीजिबल रीजन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। Okay, so that means any given linear programming problem can end up in either of these four situations. You can either have a unique solution, you can either have alternate or infinitely many solutions, you can have unbounded solution, or you can have no feasible solution at all. Okay, so these are the four situations in which we can end up with. Now, is this clear? अब तो वो ग्राफ अजीब सा नहीं लग रहा? Every अजीब graph also has a significance. Is it Yes. okay now, or is there a query? तो बता दो अभी। मैम जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने दिया था मैम उसे एक बार बता देती। उसमें भी अनबाउंडेड आ रहा होगा। यस मैम। तो उसका अनबाउंडेड, फर्स्ट सेकंड दोनों प्रॉब्लम्स का अनबाउंडेड सॉल्यूशन है, थर्ड का इनफिजिबल। ओके मैम। जो 3 प्रॉब्लम्स दिए थे कल, ठीक है? यस मैम। एनी अदर क्वेरी? Because now we have to move on to simplex method or the algebra behind this. मैम जो आपने कहा था मिनिमम वाला सॉल्यूशन जो अनबाउंडेड, जब हमारा रीजन होता है तो हम जो मिनिमम सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो वो हमारा अनबाउंडेड एग्जिस्ट वाले थर्ड पॉइंट में ही आएगा ना, क्योंकि वो अनबाउंडेड रीजन है हमारा। तो अगर हमारा फंक्शन मेरा मिनिमम है तो उसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ हाँ, तो यही वो तो मैंने कहा कि अगर अनबाउंडेड फीजिबल रीजन है तो जरूरी नहीं कि उसका सोल्यूशन भी अनबाउंडेड होगा। अनबाउंडेड फीजिबल रीजन का भी सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है। ओके मैम। ठीक है, तो अनबाउंडेड फीजिबल रीजन डज नॉट इंप्लाई दैट द प्रॉब्लम हैज अनबाउंडेड सोल्यूशन। अनबाउंडेड फीजिबल रीजन और अनबाउंडेड सोल्यूशन तो अलग चीजें हैं। यस मैम। ठीक है, अनबाउंडेड सोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि हमारे x1 और x2 जो हैं डिसीजन वेरिएबल्स जो हैं, वो जो मर्जी वैल्यू लें उनकी वजह से हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू भी अनबाउंडेड हो रही है। ये तो हुई अनबाउंडेड सोल्यूशन। लेकिन अनबाउंडेड फीजिबल रीजन का मतलब ये हुआ कि जो हमारा फीजिबल रीजन आ रहा है उसकी एक तरफ की बाउंड्री एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन ऐसे केस में अनबाउंडेड फीजिबल रीजन में भी सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है। यस मैम। ठीक है ना, तो दोनों में डिफरेंस हो गया ना। कई बार स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि अनबाउंडेड फिजिबल रीजन आया और लिख दिया कि द प्रॉब्लम हैज एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन। नो, नॉट नेसेसरली। उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, अब देखो एक और दिखाती हूँ मैं, एक मिनट। हमारा जो एक फिजिबल रीजन था, मतलब वो तो हमने जो बनाया आया तुम्हारे पास एक फिजिबल रीजन ऐसे भी आ सकता है ये। ठीक है ना, अब इसमें भी यही प्रॉब्लम है कि अगर मैक्सिमाइजेशन, अब हमारा जो फिजिबल रीजन आ रहा है फिर से अनबाउंडेड है, इस तरह का बन रहा है ना, ये बन रहा है हमारा फिजिबल रीजन, यहां से एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। अब इस केस में भी क्या हो सकता है? इस केस में तो बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास मिनिमम आ सकता है। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऐसा हो कि वो इस कॉन्स्ट्रेंट के पैरेलल हो जाए तो ऑल्टरनेट भी आ सकता है, बट फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है। इज दिस क्लियर नाउ? कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम, कि वो अनबाउंडेड रीजन हमारा मतलब होता है कि एक क्लोज्ड बाउंड्री हमें मिलेगी,
हाँ, और अगर और जो अनबाउंडेड सोल्यूशन होता है कि अगर हम डिसीजन वेरिएबल की जो वैल्यू है अगर चाहे इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, तो जेड की वैल्यू हमें मिलेगी वो हमें अनबाउंडेड मिलेगी, मतलब हाँ हाँ, अनबाउंडेड सोल्यूशन का मतलब वो है। सोल्यूशन। यस मैम। सोल्यूशन मतलब ऑप्टिमल वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन की अनबाउंडेड है, हम्म। ठीक है ना? इज इट क्लियर टू ऑल नाउ? यस मैम। हाँ, ठीक है, चलो अब फिर आगे बढ़ सकते हैं। यस मैम। चलो अब अपने दिमाग में ये 4 चीजें रखनी है। सी व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस अगेन एंड अगेन, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर आल्सो, we are going to now see, this is all possible, these are all the possibilities that we have seen that any given linear programming problem can end up with, provided we only have 2 variables under study. ठीक है ना? हमने दो ही वेरिएबल्स थे, उनको प्लॉट किया और आगे काम कर दिया. बट इन प्रैक्टिस we are not going to deal with only 2 variables. We can have any number of variables with us. So if my problem has n number of variables, then of course I cannot, chalo hum kehte hain, nowadays since the technology has advanced and we can plot 3D graphs also, so hum at the most graphically 3 variables tak solve kar payenge. What about more than 3? We cannot solve them graphically. So that means graphical method though is good, but it's good only for limited number of variables. We cannot extend it to any number of variables with us. Okay, so we need to devise some algebraic methods of solving these linear programming problems as well. Okay, and to derive to work upon these algebraic methods, like we have one method which is so far the best, considered the best, which is the simplex method of solving a linear programming problem. But to in order to develop the theory behind the simplex method, we have to first of all understand how we can extend, what is the importance of every corner point here, how we are moving, how we are improving. अब इसमें तो like अगर हमने unique solution की भी बात करें, so what was the very first thing that we did? We identified the corner points of the feasible region, चाहे वो जितने थे 3 4 5 any number, that depends upon how many constraints do you have. So the more constraints you have, maybe more corner points you are going to get. Okay, so what do? We just consider the coordinates of these corner points, we evaluate the value of z at these corner points, and then consider whatever is maximum. So in a way, what are we doing? Say we start with origin, एक direction में move करना शुरू करते हैं, right? Say for example, चलो मैं एक general लेती हूँ. Okay, so things may be, say supposing your feasible region ends up with, मैं एक random polyhedral सा ही बना रही हूँ, ठीक है, something like this. तो इसका मतलब एक constraint ये हो गया, ठीक है, ये एक constraint है, this is the other constraint, this is the third constraint, and this is the fourth constraint. So say supposing this is my feasible region. Okay. Now, what are the corner points? O, A, B, C, D, and E. Okay. Now, what we do? जो अभी तक हमने method सीखा, उसमें what are we doing? We know the coordinates of all these 5 vertices. ठीक है. What we do? We evaluate Z. Okay. Say we evaluate Z at O. So Z will turn out to be 0 at O, right? Then we evaluate at O. This is Z. At A, kuch aayega, Z1, right? Then B, then C, then D, then E. Okay. Then what do? We see whichever is maximum. So supposing the maximum occurs at D, this is giving me the maximum Z, right? Now imagine you just had 2 variables and 5 vertices. So you could evaluate all and then see. Now imagine you have a situation where your number of constraints is very large. Variables ko bhi 2 hi rehne do, koi baat nahi. But then what are you doing actually? You are unnecessarily evaluating Z at each of the points first and then comparing which one is maximum.
So supposing if we can, devise a method in a manner such that we start with 1, which is origin, 0 से हम start करते हैं. But then instead of evaluating at every point, supposing the method tells us, say, we were to reach D to reach the maximum, right? एक path ये था कि हम पहले O से A गए, फिर B, फिर C and then D. The other could have been हमने O निकाला, E निकाला और हमारे पास D पे maximum आ गया. तो किस में कम calculations करनी पड़ी? Obviously इस method में, इस path में, right? So basically what are we doing? We are moving from one extreme point to another till we reach a maximum. एंड अगर हमारे पास कोई ऐसा मेथड आ जाए, अगर हम इस पाथ को भी फॉलो करें, तो जैसे ही हम डी पे आए, हमें कोई ना कोई ये बता दे कि बस ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा जेड का वैल्यू नहीं बढ़ेगा. सो व्हाट विल डू? वी वोंट इवैल्यूएट एट ई, सो विल टर्मिनेट हियर. So basically the purpose of simplex method is this only, that we identify first of all the extreme points where a solution can exist, and then we see whether the solution that we are getting is optimal or not. If it is optimal, we end up the process. Supposing A पे ही optimal आ जाता, तो हमें बाकियों पे करने की जरूरत ही नहीं थी. So supposing we are getting an optimal at one point, we end up there. No need to evaluate at the remaining extreme points. So this is an unnecessary exercise that we are doing, right? But in graphical, it was simple because it was not much and we were doing manually, right? But say supposing you have 50 number of variables and you have 200 number of constraints. Practically, this can happen. So how are we going to move ahead? So this will be too tedious a job. Okay, so that is why we need an algebraic method, which is in a way comfortable to evaluate, to operate. And secondly, it gives us the optimal solution as early as possible. We are able to take a decision, not just an optimal solution, we are able to take a decision. Whether an optimal will exist, whether alternate optima will exist, whether the problem is going to have an unbounded solution, whatever, either of the 4 decisions we have to take. But then we can take them at the earliest possible situation. So that is the objective of, working on and developing this algebraic method, which is your simplex method. Now, as I was saying, like all this was developed during World War II, and so far, the simplex method was given by Danzig, and he is still considered to be the father of operation research. But then the point is that, there is a school of controversy because there was a Russian mathematician also, and he had given this idea much before Danzig gave. But then since Danzig's method became more popular, so it goes by his name only, right? So, but anyway, both their methods were similar, how to go about this. Okay, but as I said before, we move on to, the proper algorithm behind the simplex method. We have to identify, we have to develop a one-to-one correspondence. We have to prove the one-to-one correspondence between whatever we have done geometrically to whatever we would be doing algebraically. Okay. So for that, let us go back to our system of equations. Okay. We'll come to the constraint part later. Let us go back to system of equations because we are familiar with that algebra part of system of equations. Why system of equations become important now? Because see, graphically, we could plot inequalities. See, your constant, your objective function is either maximize or minimize z equal to something, subject to you have seen your constraints, right? Your constraints can be less than or equal to types, your constraints can be more than or equal to type, and we have seen that our constraints can be exactly equal to types also. Okay, and of course our all decision variables xj are more than or equal to 0, no matter how many decision variables we consider. This is a typical linear programming problem, how it is going to look like, right? Now geometrically it was possible to look or to see how these inequalities are going to behave. We could shade, because geometrically we needed the region covered by those, right? Now, usme bhi it was easy to see because we had only two variables.
तो अगर हम दो वेरिएबल्स थे हमारे पास, हमने जैसे सपोजिंग थी हमारे पास x1 x2 लेस देन और इक्वल टू 10, x1 प्लस x2 लेस देन और इक्वल टू 10, तो हमने क्या करा, वी फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्टेड इट इनटू एन इक्वेशन इस टाइप की, एंड देन लुकिंग एट हाउ द पॉइंट्स आर गोइंग टू बिहेव, हमने ये किया। बेसिकली हमने क्या करा, हमने अपने x1 x2 प्लेन को with the help of this line we divided into two halves, and then we considered only that half which was of importance to us, right? Either it was less than or equal to types, that means either it was this region or it was this region, depending upon the kind of inequality we had, right? Now in two variables, yes, it was a line. Now imagine in three variables what it would be. I will have constraints like x1 plus 2x2 plus 3x3 less than or equal to 5. I can have, right? Now I have three variables, x1, x2, x3. So that means I have a three-dimensional space somewhere, right? So instead of x1 and x2 plane, I have x1, x2 and x3. इस टाइप का आ गया ना, x2 and x3. अब अगर मैं इसको प्लॉट करूं x1 plus 2x2 plus 3x3 equal to 5, what would it be? इस पूरे थ्री डिमेंशनल स्पेस में ये क्या देगा मुझे? What would it be? Ma'am, plane. It will be a plane. Just a minute, girls. हाँ जी, सो इट विल बी अ प्लेन, राइट? अब वो प्लेन क्या करेगा? इन अ वे उसने भी एक प्लेन को, अगर इमेजिन कि अब जैसे ये हमारा, अब हमको भी इसमें, बिकॉज वी हैव नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस हियर आल्सो, सो दैट मींस वी आर इन द फर्स्ट ऑक्टेंट ओनली, ठीक है? अब इमेजिन करो कि जिस रूम में तुम बैठे हो दैट इज योर फर्स्ट ऑक्टेंट, ये हमारा x1 x2 x3 आ गया ना, ठीक है? अब ऑल ऑफ अ सडन तुमने एक स्लैंटिंग सी दीवार खड़ी कर दी, यू नो, छत पे कहीं से और नीचे फ्लोर तक, वी हैव some cardboard placed, right? So what has it done? That is your plane, which is this constraint x1 plus x2 plus x2 plus 2x2 plus 3x3 equal to 5. So what has it done? It has again divided your room into two halves, right? So one is the upper half, the other is the lower half from that wall that we have constructed in between, right? इसी तरह से हमने दूसरा कॉन्स्टेंट लिया, वो भी किसी एंगल पे प्लेस्ड होगा, बट हमको एक फिजिबल रीजन चाहिए. So basically what we are going to get is that after plotting so many constraints, we are going to get just one portion of that plane. जो हमारा रूम का एक, we'll get just small portion of that room which will serve as the feasible region. अब वो कहीं भी हो सकता है. It would be towards touching the ceiling, it would be towards touching one of the walls, it could be towards touching the floor, anywhere it can be, but it will be a bounded region, some sort of a feasible region. So that we call as, in fact, अब इसको तो हमने plane कह दिया, right? Now increase the dimension, that means move over to 4 variables. अब 4 variables तो हम सिर्फ imagine ही कर सकते हैं ना, we can't even plot them like this. अब उसको क्या नाम दें, right? So instead of, you know, calling them as line or plane or so on, we call them as hyperplanes. चाहे वो किसी भी dimension में हो, right? It could be a 2-dimensional hyperplane, it can be a 3-dimensional hyperplane, it can be a 4-dimensional hyperplane, it can be anything. So basically every constraint, you know, which it is dividing your space into halves,
that is same as dividing your space into hyperplanes. Every constraint is considered as a hyperplane. Okay. Now the point is that once we have this, so automatically अब जैसे इसमें जब हमने graphical किया तो जो हमारे corner points भी आए, so they were what? They were sort of an ordered pair, right? 3 dimension में आएंगे तो हमारे पास इस तरह के points आ जाएंगे, x1, x2, x3. 4 में जाएंगे तो 4 tuple आ जाएगा. In case we have an n dimensional, if I have n variables, that means I am in an n dimensional space. So I will have the points will be an n tuple with x1, x2, xn, right? So this is how the variables or the points are going to behave, right? Now, as I said, geometrically still it's easier to consider कि हमने एक equality लिया और उसका corresponding inequality भी हमने imagine कर लिया. But algebraically, how to imagine that? We cannot write an inequality. We cannot solve an inequality in an algebraic manner, right? So that means we need some more methods. That is where system of equations come. And let's see, this is why, because अगर inequality है, तो हम उसके corresponding कहीं ना कहीं equality भी है ना? So we can, in fact, not just this, we can always convert an inequality into an equality. Like for example, say supposing my constraint is say less than or equal to types. अब जैसे मेरे यही ले लो, say x1 plus 2x2 plus 7x3 less than or equal to 15. Supposing this is one constraint. And say, okay, let this constraint refer to any of the resources. Because while formulating the linear programming problem, we have understood that objective is what we want to either maximize or minimize. Constraints are always related to the resources under which we are working, right? So as many resources we have, as many limitations we have on the resources, those many number of constraints we are going to get. Okay. And the last one, which was the non-negativity restrictions that we have imposed, because we know that the solution can never be negative in nature. Okay. Now, if you just look at this, right now, say supposing I have a problem where I have only 3 variables. So one of first, my first constraint looks like this. ठीक है. अब इसको अगर हम अभी भी क्या है हमारे पास x1, x2, x3, there are not variables, but the point is that they are physical variables. ठीक है ना? They are the decision variables. तो ये मेरे को these variables I have identified as per the conditions given by the decision maker to me. So they have a physical importance as well, right? Now, when I say mathematically, if you look at it, you have a left-hand side and you have a right-hand side, right? Your left-hand side is less than or equal to right-hand side. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब there is a scope of adding something on your left-hand side so that it becomes exactly equal to your right-hand side. Yes or no? Okay. So what we do, we can introduce another variable. See, हमें नहीं पता कितना. See, I don't know. I have not solved the problem as yet. So I don't know what values x1, x2 or x3 can take, right? I imagine, of course, they will take some values, right? But whatever values they take, in spite of that, it will still be less than or equal to. So that means what I can do is, I can introduce another variable x4 and I can write this equation as this inequality as equation. कर सकते हैं कि नहीं? मैंने एक मुझे नहीं पता क्या वैल्यूज आ रही है अभी, बट डेफिनेटली एल्जेब्राइकली अगर मेरे को एक इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करना है, that one thing is very clear, because it was less than or equal to types, that means I need to add something on my left hand side so that they become equal. And whatever that something is, I treat that as variable, because मुझे नहीं पता वो क्या है. हो सकता है वो कोई positive value ले, हो सकता है वो zero ले, I don't know, right? So I add that variable. So और physically इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब, see, say for example, if this was my wood,
Imagine this constraint was my wood. I had chair, table, and a bookshelf, right? So that means the left hand side was denoted was the usability, or जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि हम ये इतनी खपत थी हमारी वुड की, राइट? और ये अवेलेबिलिटी था, तो डेफिनेटली whatever we were using was less than or equal to what was available. So definitely we would be left with something extra, बच जाएगा हमारे पास, right? So that और या हम कुछ extra use कर सकते थे. So that means economically we can say that there is some slackness in this resource. So that is why whatever variable we add, they are called as slack variables. Now they are not decision variables, mind you. ये मेरे को this they do not correspond. X4 does not correspond to either chair, table, or a bookshelf. X4 is just a variable that I have introduced to convert this inequality into equality. So I have added it. We'll see how it behaves after we get a solution. So that is why we call them as slack variables, because they represent some slackness, some lacking in a particular resource. So that is why we call them as slack variables. And since they do not have any physical significance, that is why their contribution, see, chair, table, and a bookshelf, they were contributing to my objective function. My objective function was what? To maximize profit. Each chair, each table, each bookshelf was giving me some profit. But the slack variable, since it does not exist physically, so obviously it will not fetch me any profit. So the contribution of this slack variable in the objective function is going to be 0. So in the objective function, we can always write it as 0x4. Okay, so we'll come to it when we solve, when we come to the actual simplex method. But what we need to understand is that algebraically also we can convert any inequality into equality. Ab ye to hui when we had a less than or equal to type constraint. So supposing you have a constraint as 3x1 minus 5x2 plus 9x3 more than or equal to 20. Now you have a left-hand side more than or equal to the right-hand side. That means what? There is something surplus in your resource. Okay. So if there is something surplus, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको equality बनाने के लिए what do we have to do? We have to subtract something from the left-hand side. Okay. So what I can do is I can write 3x1 minus 5x2 plus 9x3 minus x5 equal to 20, because my left-hand side was more than or equal to the right-hand side. So such variables are called as the surplus variables. Okay. So surplus variables need to be subtracted. Slack variables need to be added. Okay. Again, iska contribution objective function mein, again it will be 0. Why? Because physically it does not exist. Though they have even slack, when we move on, when we develop the subject further, you will realize even slack and surplus variable have their economical significance. With regard to economics, they have. Because these are certain variables that we have added or subtracted from the resources. अब resource भी तो कहीं ना कहीं पैसा involve कर रहा है. अगर मैं, if I am producing chair, table, and a bookshelf, obviously I'm investing some money. I'm investing money in the raw material. I'm investing money in the manpower. I'm investing money in the infrastructure that has been developed. अगर उसमें slack surplus आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं background में तो money involved है. So definitely they have a significance. But as far as maximizing profit is concerned, they have no significance in that. So we'll study these slack and surplus variables in details also when we do the sensitivity analysis. But right now for us, slack and surplus variables are the two variables that we have introduced, either added or subtracted, to convert inequalities into equalities.
Is this clear? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है ना, यहाँ तक तो समझ आ गया. ठीक है. अब now the point is that since we have converted everything into equalities and constraints now have become what? They have now become system of equations. ठीक है ना. अब from system of inequations they have been converted back to system of equations. So what we do is see how we can write down. अब हम क्या करते हैं, देखो. A typical linear programming problem can look like something like, say, supposing you have a problem in which there are n variables and m constraints. Supposing I have these. Okay. So ab shall, okay, let's write the maximization. Otherwise, see, we'll do everything with minimization type because your book handles minimization. कैसे होएगा अभी बताती हूँ. Let's see. Say supposing I have my objective function is to maximize it. See, I can write it as c1x1 plus c2x2 plus cnxn. I can make it as, this will be my objective function where c1 denotes what? C1 denotes the per unit profit due to the product one. See, x1 corresponds to the decision variable, first decision variable, right? So C1 can be treated as a per unit profit from the first decision variable, or first decision variable jo marzi ho mera, right? Similarly, C2 will be the per unit profit due to the second decision variable. Cn will be the per unit profit due to the nth decision variable. So this is how a typical objective function would look like if we are having a maximization problem. Okay. Now, when we say the constraints subject to, I think general, I can write it as a11x1 plus a12x2 plus a1nxn less than or equal to b1. Okay. Now, understand what we did in the first class. हमने जब इसको formulate भी किया था. So it was like, this is the first constraint. So it relates to your first resource that you are talking of. Okay. So A11 here would relate to the utilization of the first resource to the first decision variable, right? Similarly, A12 is the utilization, per unit utilization of the first resource for the second decision variable, and so on and so forth. Similarly, how many resources or how many constraints do you have? M. So how many such equations will I have? M in number. See, second will be what? A21x1 plus A22x2 and so on. A2nxn less than or equal to B2. Now, what is this B1? The availability of the first resource. What is this B2? Availability of the second resource. And so on, so on. How many? The last will be what? AM1x1 plus AM2x2 plus AMNxn less than or equal to BM. The mth constraint, the last one that I had. Okay. So these are the constraints that I'm going to get, and my non-negativity restrictions that x1, x2, xn is more than or equal to 0. This is how a typical linear programming problem will look like when you have the objective function as maximization. And for the time being, I'm considering all my constraints to be less than or equal to types. Okay. Now, say supposing I define, now I don't want to write all this every time. I can bring in matrices here in the sense that I define a matrix C as C1, C2, Cn. कर सकते हैं, ठीक है. I define a matrix X as x1, x2, xn. लिख सकते हैं, ठीक है. And I can define two more matrices. I define A as A11, A12, A1n, and so on, AM1, AM2, AMn, the coefficients of the constraints. And I define another matrix, B as B1, B2, Bm. कर सकते हैं,
see what is the order of A? M cross n. Because there are m constraints and n variables. And I can rewrite my linear programming problem as maximize z equal to cx subject to ax less than or equal to b, x more than or equal to 0. कर सकते हैं कि नहीं? In fact, let's do one thing, because तुम्हारी बुक में यही notation use किया हुआ है, so I'll also use the same notation here. They're calling it as small b. Okay, लिख सकते हैं? Or because capital B denotes something else in the book also. Excuse me, ma'am. हाँ जी, बोलो. Order of the matrices can be defined as per the standard कि multiplication of matrices is defined. ठीक है? अब ठीक है? Yes. या और कोई क्वेश्चन है इसके अलावा? मैम मैं ये पूछ रही थी कि अगर सारे कंस्ट्रेंट्स में अलग अलग इनइक्वालिटीज हुई तो मतलब किसी में लेस देन इक्वल टू, किसी में ग्रेटर देन इक्वल टू, तो आ रही हूँ उस पे भी आ रही हूँ. ठीक है, अभी मैंने यही बोला, हमने अभी ये कंसिडर करा. In fact, they do not make any difference whether they are less than or equal to, more than or equal to, because ultimately for solving, we are converting them into equalities. Okay? अब ये तो हुई, this is how my problem looks like in case my problem is maximization and less than or equal to types. Okay? Now, as we have seen, like, because we have to now, since we have somewhere in between brought in the concept of matrices also, and from the study of matrices, we know how to solve system of equations. वो तो पढ़ा है ना हमने, हम सब पढ़ा है, हमें रैंक भी पता है, हमें पता है लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स क्या होते हैं, कैसे क्या निकालते हैं. We have studied everything. So that means somewhere, since we have brought in that, so definitely the first thing that we need to do is convert these inequalities into equalities. चाहे मेरा कोई भी प्रॉब्लम हो, अब जहां लेस देन इक्वल टू टाइप है वहां हम स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जहां मोर देन और इक्वल टू टाइप है वहां हम सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है? उससे ये हो रहा है कि हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स ही तो बढ़ रहे हैं. So supposing initially I had 3 variables and 3 constraints. Supposing original problem में मेरे पास 3 variables थे और 3 ही constraints थे, and all the 3 were less than or equal to types. Okay, अब उसको solve करने के लिए what did I do? In each of the constraints, इसका मतलब my decision variables were only x1, x2, x3. And since I had 3 constraints and they were all less than or equal to types, so what did we do? To convert the inequalities into inequalities into equalities, we introduced 3 slack variables. तीनों constraints में add करेंगे ना? They cannot be the same. I cannot have just one variable because every slack variable, every constraint represents a resource. So if x4 corresponds to the first resource, it cannot correspond to the second resource. They have to be different. Okay, so in the first constraint, I'll add x4. In the second constraint, I'll add x5. And in the third constraint, I'll add x6. So as a result, क्या हुआ? Now I have 3 equations. ठीक है? But how many variables do I have? 6 variables. Now, in these equations, अब in a way, जो हमारे पास ये एक constraint था, ax less than or equal to b, तो A was what? A 3x3 matrix. ठीक है ना? अब हमने जब constraints ये x4, x5, x6 introduce करे, तो x4 किस constraint में add हुआ? First constraint में. चलो इसको लिख लेते हैं एक बारी, and then randomly कुछ भी बना लेती हूँ मैं. So supposing your initial constraints were say x1 plus 2x2 minus x3, say less than or equal to 2.
2x1 minus x2 plus x3 less than or equal to 5, x1 minus 4x2 plus 5x3 less than or equal to 9. Is this okay? Randomly, अभी मैंने कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात नहीं कर रही, अभी हम सिर्फ कॉन्स्टेंट्स की बात करेंगे, ठीक है? नाउ टू कन्वर्ट, अब दिस इज लाइक, अब अभी इस केस में तुम्हारा a क्या है? 1 2 minus 1 2 minus 1 1 and 1 minus 4 and 5, यही है ना? This is your a right now. Is that okay? What is the order here? 3 cross 3, right? But since they were all inequalities, तो इसका मतलब हमको इसमें x4 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? इसको हम कैसे चेंज करेंगे फिर? x1 plus 2x2 minus x3 plus x4 equal to 2. I'm now converting my inequalities into equalities. What will be the second one? 2x1 minus x2 plus x3 plus x5 equal to 5. Then x1 minus 4x2 plus 5x3 plus x6 equal to 9. Is that okay? Now see what has happened. Your B has not changed, but your A has. What is your A now? It is now 1, 2, minus 1, 1. What about x5, x6? 0, 0. Then what is the second row? 2, minus 1, 1, 0, 1, 0. 1, minus 4, 5, 0, 0, 1. अब ये बन गया ना हमारा A. So it is now 3 cross 6. ठीक है ना? अब 3 cross 3 था, रैंक तो 3 होना हो सकता था at the most, ठीक है ना? So the rank of A will be less than or equal to 3. इधर भी rank of A will still be less than or equal to 3. But now we have 6 columns. Here we had 3 columns. So I don't know which of the 3 variables will be linearly independent and which of the 3 will be linearly dependent. Is this okay? Yes or no? Yes, ma'am. Abhi, see, this is what we are going to work on, to talk of how the linearly independent and how the linearly dependent solutions are going to behave. Which one of them will be linearly independent? Which one will be linearly dependent? Okay, so जैसे मैंने उस दिन definition दी थी, feasible solution, basic feasible solution. So now we are going to define those solutions algebraically. Okay, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो equations, अब forget about, अभी for the time being let us forget about कि हमारे decision variables कौन से थे, slack variables कौन से थे. The objective was to understand that my inequalities can be converted into equalities, and let us have a system like this, ax equal to b. यहाँ तक तो अब इतना तो ठीक है ना? I hope this much is clear to you. ठीक है कि नहीं? अरे कोई तो Yes, ma'am. So Yes, now onwards we are now going to consider this as our system of equations. Okay, when we come back to simplex method, then we'll talk of slack and surplus variables again, right? But what we have understood is that as graphically my inequality gave me a feasible region directly, algebraically if I have more number of variables, then I have to convert those inequalities into equalities so that I end up with a system of equations like this. Okay, forget about the objective function right now. We'll be bothered only about this and the fact that we need non-negativity restrictions. Okay, so in a way, my A is now m cross n. Okay, and my x is, that means my x is still x1, x2, xn. So I am assuming that my x1, x2, xn, these n variables, they include the slack, surplus, and the decision variables as well.
ओके अब मैं उसका ऑर्डर चेंज नहीं कर रही, जैसे अगर मैं इसमें 3x6 बोल रही हूँ तो मेरे जो 6 वेरिएबल्स हैं वो x1 x2 x3 x4 x5 x6 आ गए. Is that okay? And my B is still B1 B2 BM जो था हमारा पहले से. It is like this. ठीक है. Now come back to your algebra. ठीक है. अब हमको ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है. ठीक है. अब हमारे पास कितना हमारा ऑर्डर है m क्रॉस n. ठीक है. अब जब m क्रॉस n, चलो ओके लेट्स ट्राई दिस. एक दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रही हूं मैं तुम्हें. ठीक है. लेट्स ट्राई टू सॉल्व देम. x1 प्लस x2 प्लस 2x3 प्लस x4 इक्वल टू 6. 3x2 प्लस x3 प्लस 8x4 equal to 3 with x1, x2, x3, x4 more than or equal to 0. ठीक है. Supposing we have this system of equations with us that we need to solve. अब ठीक है, तुम्हें आता है, जैसे उस दिन भी तुम लोग बता रहे थे कैसे. ओके, any one of you can speak up and just say how do you normally solve it. Then I'll come back to what I want to do. कैसे सॉल्व करते हो इसको? बोलो. How do you solve this system of equations? अरे मुझे सोल्यूशन मत दो, मुझे बस मोटा मोटा बताओ कि कैसे सॉल्व करते हो. मैम रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म से. मैंने कहा ना मुझे प्रोसीजर मत बताओ, मुझे लॉजिक बताओ क्या करते हो. जो इसके पीछे की थियरी है वो क्या कहती है, क्या कर रहे हो तुम? कितने वेरिएबल्स हैं? मैम 4. 4. कितनी इक्वेशंस हैं? 2. तो क्या होगा? मैम दो मैम वेरिएबल्स को हम के और एल मान के चलेंगे और फिर उसको बाकी दो वेरिएबल्स को उसकी टर्म्स में लिखेंगे और फिर उस फॉर्म में सॉल्व करेंगे उसे. ठीक है ना. तो अब जो अनीशा ने बोला वो क्या बोला कि हम इसको रो रिड्यूस करेंगे. जब रो रिड्यूस करते हो तो आइडेंटिफाई क्या करते हो? पाइवेट कॉलम्स बोल रहे थे ना उस दिन तुम लोग. यस मैम. यस मैम. तो पाइवेट कॉलम्स दे रिप्रेजेंट व्हाट in terms of इंडिपेंडेंट वेरिएबल. वेरिएबल्स. they represent the linearly independent variables. ठीक है ना. इसका मतलब क्या हुआ कि if I have 4 variables, 2 equations, then 2 variables will be linearly independent. यही मतलब हुआ ना. 2 ही कॉलम्स आने चाहिए ना linearly independent हमारे पास. पाइवेट कॉलम्स 2 यस आएंगे ना. मैम. यस मैम. 2 variables will be linearly independent and the other 2 will be the linearly dependent variables. यही आएंगे. ठीक है. नाउ अब ये तो बहुत छोटी सी इक्वेशन थी. आई मीन मुझे नहीं पता कौन से 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड कौन से 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट. सो थोड़ा सा हम मॉडिफिकेशन उसमें कर रहे हैं, लॉजिक को नहीं छोड़ रहे. जो जो तुम करते हो बिल्कुल वही चीज करेंगे. ठीक है. वील रिड्यूस देम टू पाइवेट कॉलम्स. अब अच्छा चलो वापस आ जाओ उस पे. पाइवेट कॉलम्स की जब हम बात कर रहे हैं तो पाइवेट कॉलम्स जो होते हैं when ultimately you reduce them by row operations, तो पाइवेट कॉलम्स की एंट्रीज क्या आ जाती हैं? They correspond to what? 1. नहीं जैसे अगर इस केस में कोई 2 पाइवेट आएंगे तो इट्स अ 2x4 मैट्रिक्स. तो उस 2x4 मैट्रिक्स में उन पाइवेट कॉलम्स की एंट्रीज क्या हो जाएंगी? याद है कुछ? मैम 1 0 चलो and 0 1.
1 0 and 0 1, they will correspond to your identity matrix, right? But we don't go in, we are not directly, when we derive the simplex method, we'll do that only. But right now, what we are, since we need to understand how we are doing, अब जैसे we go back to what? Class 12. हम यही करते हैं ना कि हम any two of them, like somebody just said, one of the variable will take on the value k, the other will take on the value l, and the remaining can be expressed in terms of k and l, right? So this way we are going to get how many solutions? Infinitely many, because we can give any value to k, we can give any value to l, and accordingly we'll get the rest of the variable values there also, right? But now what we do is, instead of giving the values k and l, the easiest way is किन्हीं भी दो को zero put कर दो, कर सकते हैं वो भी, right? So what is, I can put x3 0, x4 0, right? What will I get? I'll get a solution for x1 and x2. आएगी कि नहीं आएगी? नम आएगी। अब हाँ, अब फटाफट बताओ क्या आएगी? When x3 is 0, x4 is 0, how much is x1 and how much is x2? x1 is 5 and x2 is 1. x1 is 5 and x2 is 1. तो बेसिकली हमने इसकी सोल्यूशन निकाला 5 1 0 0. इसी तरह से लिखेंगे ना सोल्यूशन, क्योंकि हमारे पास तो 4 वेरिएबल्स थे, राइट? सेकेंड ऑप्शन इज x3 0, x1 0. कोई भी दो जीरो पुट करने ना, तो मैं कोई से भी दो कर सकती हूँ. अब इस केस में क्या आई? किसकी वैल्यूज आएंगी? x2 एंड x4. Is that okay or not? अब ये बताओ, अगर x3 0 पुट कर रहे हैं और x1 0 पुट कर रहे हैं, तो क्या वैल्यूज आ रही हैं? क्या आ रही है? मैम x2 आएगी 9 9 और x4 आएगी -3. -3। क्या बोलो? Is this okay? Is this -3 ठीक है ना? तो इसका मतलब हमारी सोल्यूशन आई 0 9 0 -3. अभी हम सारे निकालेंगे, ये मैथ्स तुम करोगे सारा. नाउ व्हाट इज द थर्ड ऑप्शन? I put x3 0 and x2 0. मैम x1 45/8 और x4 3/8. 3/8।
मेरा ही नेटवर्क गायब हो गया था, नो। हाँ जी, क्या आ रहा है वैल्यू, बताओगे? मैम x1 15 मैम और x4 एक, 3/8। हाँ, अब ये x1 कितना 15, 15 और x4 3/8। ठीक है। तो इसका मतलब हमारा सोल्यूशन आया 15 0 0 3/8, ठीक है। ये तो हुआ थर्ड ऑप्शन। इसी तरह से फोर्थ में क्या ले सकते हैं हम, x1 0 x2 0, किन्हीं भी दो को जीरो पुट करना है ना, तो हमारे पास x3 और x4 का वैल्यू आएगा। ये बताओ कितना आ रहा है? मैम थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, इक्वेशन देखनी है। एक मिनट बेटा, ऊपर मतलब लाइक दिस। अच्छा, इक्वेशन लिखी नहीं? ओके, एक मिनट, आई जस्ट शो यू। ये थी ना इक्वेशंस, इज इट ओके ना? यस मैम। अब ये कितना आ रहा है? मैम मैम x3 x4 0 और x3 3। एक मिनट, एक मिनट। x1 0 x2 0 पे x3 कितना आया, मैम 3 और x4 0। 0, तो 0 0 3 0, ये सोल्यूशन आ गया, ठीक है। अब x1 0 और x4 0 हो सकता है, तो x2 और x3 का वैल्यू आएगा। हम्म, मैम x2 0 x3 3। x2 0 x3 3, ठीक है। And now the other option is we put x2 0 x4 0, तो हमारे पास आएगा मैम x1 0 and x3 3 x1 0 and x3 3। 3। नहीं नहीं, मैम ये हाँ, आएगा। यही ऊपर वाला ही आ गया ना, ठीक है, ठीक है, हाँ। नो प्रॉब्लम्स विद दैट। नाउ इज देयर एनी अदर ऑप्शन लेफ्ट कि हम किन्हीं भी दो को जीरो पुट कर सकते हैं, और हैव वी कंसिडर्ड ऑल द ऑप्शंस? बोलो, कोई और ऑप्शन रह गया है? नो मैम। We have considered all the options, ठीक है। How many such options were possible? 6,
यही हुआ ना? या इससे ज्यादा भी एग्जिस्ट करेंगी? देखो हमारे पास कितने वेरिएबल्स थे? 4। 4 में से हम किन्हीं 2 को 0 पुट कर सकते हैं, राइट? नाउ दैट मीन्स वी हैव टू चूज 2 वेरिएबल्स आउट ऑफ 4 वेरिएबल्स. कौन से 2 को हम 0 पुट कर रहे हैं? दे कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज? 4c 2 ways. यही होता है ना? एंड हाउ मच इज 4c 2? 6. यही हुआ ना? See, what is happening is whatever Yes, ma'am. solutions that you have got here, you know, the 6 possible solutions, whatever you have got, they are, in fact, they are called as the basic solutions. Okay. But if you see, first solution is okay because I have a non-negativity restriction also being satisfied here, right? But look at this solution. One of the variable has taken a negative value, है ना? हम 0 तक तो ठीक था, but इसमें क्या हुआ? One of the variable has taken on a negative value. x4 minus 3 आ गया ना? That means what? This solution is violating the non-negativity restrictions. Okay, so in a way, अब इसका मतलब क्या हुआ? See, तब भी हमने दो चीजों की बात करी थी. एक मैंने कहा था बेसिक सोल्यूशन और एक मैंने कहा था बेसिक फीजिबल सॉल्यूशंस. ठीक है? So what we have here is same kind, basic, feasible and just basic solution. So we are talking of 2 things here. ठीक है? Basic solution का मतलब क्या हुआ? All the possibilities, you know, we can have where we can choose, and they can, if I have n variables and m constraints, then they can be chosen in how many ways? NCM ways. But we also need the feasibility condition to be satisfied. अब इस केस में अगर हम, और तो कोई ऐसा नहीं हुआ कि हमारा डिसीजन वेरिएबल नेगेटिव हुआ हो, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास we had 6 possible basic solutions, out of which only 5 turned out to be basic feasible. Why? Because one of them violated the non-negativity restrictions. We want the values of the variables to be non-negative. So only 5 of them turned out to be basic feasible. Okay, so that means your basic feasible solutions will always be less than or equal to n factorial upon m factorial into n minus m factorial. ये again interview का question है ये, no? Whether they will be equal or not. The point is they will be less than or equal. अगर सारे नॉन नेगेटिव आ रहे हैं तो इक्वल है, बट अगर एक भी नेगेटिव आ गया, so obviously they have to be less than or equal to. Though number of basic solution is exactly equal to NCM, क्योंकि इससे ज्यादा हमारे पास ऑप्शंस ही नहीं होंगे, right? Now each of the basic feasible solution actually corresponds to the corner point of your feasible region. See, हो क्या रहा है इसमें? What actually are we doing? अगर हम इसी में ही वापस आ जाएं, तो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज ax इक्वल टू b. ठीक है? अब इसी प्रॉब्लम पे ही अगर हम रहते हैं, तो हमारे x में क्या है? x1, x2, x3, x4. हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं. ठीक है? हमारा a क्या है? आई एम राइटिंग इट अगेन. योर a इज एक्चुअली 1, 1, 2, 1 and 0, 3, 1, 8. Am I right? And your B is 6, 3. Am I right or not? Yes, ma'am. है ना? यही है ना हमारे पास. ठीक है? अब देखो हमने क्या करा बेसिकली. जब फर्स्ट देखो, फर्स्ट में हमने फर्स्ट
कंडीशन में हमने क्या किया था, x3 को 0 और x4 को 0 पुट किया, ठीक है। इन अ वे अगर हम अपने वापस अलजेब्रा पे जाएं तो बेसिकली हमने क्या करा, हमने x3 को k और x4 को l पुट किया, राइट। इसका मतलब हमने क्या करा कि x3 और x4 को लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स माना और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स माना, ठीक है। और अगर हम x3 को k और x4 को l पुट करते तो क्या आता, हमारा x1 जो आता दैट वुड हैव बीन इन टर्म्स ऑफ k एंड l एंड x2 आल्सो इन टर्म्स ऑफ k एंड l, यही आता ना, एम आई राइट? एनी वन ऑफ यू प्लीज Yes, ma'am. स्पीक अप, मुझे पता नहीं चलता कि तुम लोग को समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। सो इन अ वे हमारे पास क्या होता, x1 एंड x2 would have been linearly dependent on x3 and x4, right? But now what we'll do is these variables that we have randomly put equal to 0, we call such variables as non-basic variables, and x1 and x2 जिनका वैल्यू हम निकाल रहे हैं, we call them as the basic variables. ओके अब देखो इन अ वे हमने क्या करा, जो हमारा x था, इनफैक्ट अगर मैं अपना मैट्रिक्स A भी देखूं तो हमने अपने मैट्रिक्स A को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, B and N. B corresponds to what? B will correspond to the columns which are equivalent to your basic variables. In a way देखो अगर मैं इसको लिखूं, A को मैं लिख दूं, ये कॉलम हो गया A1, A2, A3, A4, चार कॉलम, मेरा जो मैट्रिक्स A है that I can write as A1, A2, A3, A4, where A1 is 1 0, A2 is what 1 3, A3 is what 2 1 and A4 is what 1 8, ठीक है। अब इसमें से हमने क्या करा, हमने x3 और x4 को नॉन बेसिक वेरिएबल्स मान लिया, राइट। तो हमने क्या करा, दैट मींस इन आवर A also we bifurcated into two parts, A3 and A4. This part of the matrix A we are calling as N because they correspond to the non-basic variables here, and A1, A2 we are calling as B, which corresponds to the basic variables x1 and x2. Okay. अब और जो हमारा सोल्यूशन आया देखा जाए तो x भी तो अब जो इसमें तुमने सोल्यूशन निकाला था, कैन एनीवन रिपीट हमारा सोल्यूशन क्या आया था, x3 x4 तो 0 0 थे, x1 x2 की क्या वैल्यू आई थी मैम 5 1 5 and 1, 1. ठीक है ना। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, हमने अपने x को भी दो पार्ट्स में डिफाइन कर दिया, एक those variables which correspond to the basic and those variables which correspond to the non basic. हमारा x भी तो डिवाइड हो गया ना, एक्चुअली हमारा x क्या था, x1 x2 x3 x4, तो इसका मतलब इसको हमने लिख दिया बेसिक एंड नॉन बेसिक, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बट नॉन बेसिक वेरिएबल्स को तो हमने 0 पुट किया था, राइट। इसका मतलब मेरा xn तो 0 होगा, यही आया था ना हमारे पास सोल्यूशन भी, इसको हम लिखेंगे भी तो ऐसे 5 1 0 0, तो जो xn के कॉरेस्पॉन्डिंग थे वो तो 0 आए, और जो xb के कॉरेस्पॉन्डिंग थे वो हमारे पास वैल्यूज आए। We have seen them as positive, we have seen them as 0 also, and we have seen them as negative also. अब इसका मतलब what we are doing now is we are actually splitting our A. अब हर केस में क्या हो रहा है, B और N चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। सेकेंड ऑप्शन जब हमने लिया था तो उसमें हमने किसको 0 पुट किया था, प्लीज रिपीट समबडी, अदरवाइज मुझे ऊपर जाना हमें पड़ेगा। x3 और x1 को हमने 0 माना था, x3 को 0 माना था और x1 को x1 0 माना, ठीक है ना। तो इसका मतलब इस केस में जब हमारा A, फिर हमने डिवाइड किया B और N में, ठीक है, लेकिन इस केस में N जो होगा वो A1 और A3 हो गया, और B क्या हुआ A2 और A4, ये दो कॉलम्स आएंगे ना B के कॉरेस्पॉन्डिंग, इसीलिए हमारा जो X था XB और XN भी चेंज हुआ, बट
एक्स एन फिर भी 0 रहा, क्योंकि नॉन बेसिक तो अभी अब एक्स एन में हमारे पास कौन से आ गए थे, x1 और x3, जिनको हमने 0 हुई किया, और एक्स बी क्या आ गया था, x2 और x4। अब इसमें एक वैल्यू नेगेटिव आ गई, x2 की कोई वैल्यू आई और x4 हमारी नेगेटिव आ गई थी ना इस केस में। तो Yes, ma'am. इसका बट हमारे को कंडीशन क्या है कि हमारा x मोर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, चाहे वो एक्स बी हो चाहे वो एक्स एन हो, तभी हम एक्स एन में जितने भी हम अपने नॉन बेसिक वेरिएबल्स मान रहे हैं उनको हम 0 पुट कर रहे हैं, राइट। सो 0 इज स्टिल एक्सेप्टेबल बट नेगेटिव इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसलिए हमने कहा कि ये सोल्यूशन जो है हमारी बेसिक फीजिबल सोल्यूशन नहीं है। It was a basic solution, but not a basic feasible solution. क्यों? Because it could not satisfy the non-negativity restrictions. Is this clear? So basically what we are doing is at every stage, we are changing our A. जो हमारा A था उसको हम हर बारी दो पार्ट्स में स्प्लिट कर रहे हैं, B और N। हम अपने X को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर रहे हैं, XB और XN। हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, ए एक्स इक्वल टू बी। सो बेसिकली हमारे को सोल्यूशन कहां से आ रहा है, बी एन एंड एक्स बी एक्स एन, क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट डिफाइन करना है। ए एक्स इक्वल टू बी का मतलब यही हुआ ना कि ए को हमने कैसे लिखा है, कॉलम्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द बेसिक वेरिएबल्स एंड द कॉलम्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द नॉन बेसिक वेरिएबल्स, और हमने अपने वेरिएबल्स को भी उसी अकॉर्डिंगली सब्स्टिट्यूट कर दिया। बट एक्स एन तो हमेशा 0 है। इनफैक्ट इसका मतलब क्या हुआ, बी एक्स बी प्लस एन एक्स एन इज इक्वल टू बी, अगर हम मैट्रिक्स इक्वेशंस में लिखें इसको तो। इज दिस ओके, दिस इक्वेशन? क्योंकि हमने अपने ए को भी स्प्लिट कर दिया। आ रहा है ना ये समझ में बेटा? Yes, ma'am. इतनी हल्की सी यस बोलो जल्दी, नहीं तो अगर ये नहीं समझ आया तो आगे कोई थ्योरम समझ नहीं आएगी। मैम ऊपर वाला नहीं समझ आया। क्या? एक बार रिपीट कर दीजिए। Okay. See, what I am saying is that तुमने अगर अपनी 6 ऑप्शंस हम ऊपर स्टडी करें तो हमारे जो A के कॉलम्स थे A1, A2, A3, A4, हम हर बारी A को कैसे लिख रहे हैं, B और N। यहां तक तो समझ आ गया ना कि हम Yes, ma'am. किन्हीं दो कॉलम्स को नॉन बेसिक मान रहे हैं, किन्हीं दो कॉलम्स को बेसिक मान रहे हैं। नॉन बेसिक किनको मान रहे हैं, जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स को हम 0 पुट कर रहे हैं, बिकॉज वो नॉन बेसिक वेरिएबल्स है। यहां तक तो ठीक है? ठीक है। इसी तरह से हम अपने x को भी तो डिवाइड कर रहे हैं xb और xn में। जिन वेरिएबल्स को हम 0 पुट कर रहे हैं, जिनको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट अज्यूम कर रहे हैं, उनको हम xn बोल रहे हैं, और जो बाकी की वैल्यूज हम निकाल रहे हैं उनको हम xb बोल रहे हैं। अब ये थोड़ा सा ये लग रहा है कि जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है वो नॉन बेसिक है, इसको इस तरह से कोरिलेट कर लो। ठीक है। अब हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या था एक्चुअली, तो ax इक्वल टू बी। इसका मतलब अब तुमने जो मैन्युअली करा वो तो तुमने 0 पुट किया, फिर उनको बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन उसको एलिमिनेट किया और 0 और फिर बाकी की वैल्यूज निकाली। अल्टीमेटली तो तुमने बी एन एक्स बी एक्स एन इक्वल टू बी को ही सॉल्व करा। यही तो था हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इज इट ओके और नॉट? Yes, ma'am. ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्टीमेटली हमने जो सॉल्व करा वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या था, दैट वाज नथिंग बट बी एक्स बी प्लस एन एक्स एन इक्वल टू बी। इन्हीं को कर दिया। अब ये सब मैट्रिसेस हैं, ठीक है। बी कैसा मैट्रिक्स है, जिसके कॉलम्स में वो वाले कॉलम्स हैं ए के जो बेसिक वेरिएबल से रिलेटेड है। इज दिस ओके नाउ? यस मैम। ठीक है। अब हमने क्या करा था, जितने नॉन बेसिक लिए उनमें हमने एक्स एन
उनको वेरिएबल्स को क्या वैल्यू दिया था? 0। सबसे पहले हमने x3 x4 को 0 दिया, फिर किन्हीं दो को 0 दिया, फिर बाकी दो को 0 दिया। तो इसका मतलब हर स्टेज पे जो नॉन बेसिक हमने वेरिएबल्स अज्यूम करे, जिनको हम पहले किसी जमाने में k और l माना करते थे, उनको हमने 0 मान लिया, बिकॉज दैट्स द इजीएस्ट वे इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग देम एज k and l। सो बेसिकली xn तो तुम्हारा हमेशा 0 है, तो nxn क्या होगा? 0। यही तो किया तुमने, एलिमिनेट किया ना उनको। जब सिस्टम सॉल्व किया तो यही तो किया तुमने, x3 x4 को 0 पुट किया, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये सब भी तो 0 हो गया। तो अल्टीमेटली जो इक्वेशन तुमने सॉल्व करी, वो तो यही वाली इक्वेशन सॉल्व करी, यही किया ना? यस मैम। तो Yes, बेसिकली जो तुमने सोल्यूशन निकाला वो क्या निकाला? एक्स बी इक्वल टू बी इनवर्स बी। और बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्यों? क्योंकि हमने उन्हीं को ही तो बेसिक माना, लीनियरली डिपेंडेंट माना है, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। बाकियों को तो हमने 0 अज्यूम किया है। अब थोड़ा सा होमवर्क, आई एम सॉरी, थोड़ा सा होमवर्क हम और कर सकते हैं। आई वोंट डू मच टुडे, ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रही हूँ अब, ठीक है? इन द सेंस शॉर्ट एग्जाम्पल है, इसलिए तुम्हारी किताब का ही, पहले वाला मैंने कहीं और से लिया था। 2 काम दूंगी करने को। देखो तुम्हारे पास एक ये सेट ऑफ इक्वेशंस है, अगेन इट्स नॉट मच, x1 प्लस x2 लेस देन और इक्वल टू 6, x2 लेस देन और इक्वल टू 3, ठीक है? अब ये तो एक्चुअली में कॉन्स्ट्रेंट्स है, राइट? सो वी हैव टू कन्वर्ट देम टू इक्वालिटीज। तो इसमें हम एक स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 6 एंड x2 plus x4 equal to 3, where we are assuming that x1, x2, x3, x4 is more than or equal to 0, ठीक है? अब देखो, अब तुम्हारा a क्या बन जाएगा? a will be 1 0 1 1 1 0 0 1, ये बन गया ना a इसका, ठीक है? b क्या है? 6 3, ठीक है? अब तुम्हारे हैं ये कॉलम्स a1 a2 a3 a4। हमारे a का क्या आ गया? सॉरी 4 क्रॉस 2 ना 2 क्रॉस 4, ठीक तो लिखा था मैं, ठीक है? नाउ एट द मोस्ट इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो सकता है? 2, ठीक है ना? तो दैट मीन्स ओनली 2 ऑफ द वेरिएबल्स कैन बी लीनियरली इंडिपेंडेंट एट द मोस्ट, ठीक है? तो 2 ऑफ द वेरिएबल्स कैन बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, कौन से? तो जिनको लीनियरली इंडिपेंडेंट ट्रीट कर रहे हैं वो हमारे कौन से वेरिएबल्स हैं? नॉन बेसिक। और लीनियरली इंडिपेंडेंट तो बेसिक होंगे ना? नहीं ना, वही तो मैं कह रही हूँ, समझो ना। बेसिक तो और चीज हो गई, नॉन बेसिक दूसरी चीज है। नॉन बेसिक वो वेरिएबल्स हैं जिनको हम 0 पुट कर रहे हैं, हाँ। और जिनको 0 पुट कर रहे हो वही तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। के और एल उन्हीं को ही मानते हो ना? यस मैम। बाकी दो की वैल्यूज तो के और एल के बीच में के टर्म्स में निकालते हो ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? बाकी दोनों लीनियरली डिपेंडेंट हुए ना। फिर ये इसलिए मैंने इस पे इंसिस्ट किया था। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग लगता है, क्यों हम क्यों मान रहे हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट? क्या होना अच्छी बात है या लीनियरली डिपेंडेंट होना ज्यादा अच्छी बात है? दे आर both are equally important. So what I want you to do now is identify हर स्टेज पे मुझे अभी we are looking at all possible options that we have with us. अब देखो तुम्हारा x क्या है? x is again your x1, x2, x3, x4. अब अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन अपना मान रही हूं, x3, x4 को नॉन बेसिक मान लिया मैंने, तो इसका मतलब x3 को 0 पुट कर दिया, x4 को 0 पुट कर दिया। इसका मतलब मेरा xn क्या हो गया? x3, x4, और xb क्या हो जाएगा फिर? x1, x2। तो मैंने फिर अपने x को 2 में स्प्लिट कर दिया ना, xb xn में। बट नाउ योर a,
अभी तक क्या किया था, जो पहले तुमने किया वो हमने किया बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। अब हम क्या कर रहे हैं, हर स्टेज पे अपना बी और एन आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देखो अब तुम्हारा ए तो ये है ना, A1 A2 A3 A4। अगर मैंने X3 X4 को नॉन बेसिक माना है तो एक्चुअली तो मेरा A दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ना, B एंड N। So that means for this option, my N is A3 A4. And what is my B now? A1 A2. Are you getting the point now? And from the matrix equation that I just gave you, you don't have to find, you don't have to evaluate anything. Since Xn is always 0, we just need to compute XB, which is nothing but B inverse B. Or B क्या है तुम्हारा? A1 A2. So basically in the first case, what is B? 1 0 1 1. Is it clear or not? देखो इसका मतलब इस केस में अगर मैं अपने मैट्रिक्स में से आइडेंटिफाई करूं तो सिंस माय x3 was 0, my x4 was 0, that means my that means my xb will be x1 x2. Therefore I just need to identify my b, which will correspond to the columns A1 and A2. So which is nothing but 1 0 1 1. And what will be my xb? That will be nothing but b inverse b. And how much is your b? 6 3. That means I don't have to eliminate the variables. I just have to identify my b, find its inverse, multiply by this matrix B, and that will give me my xb. Similarly, in the second option, if I put x1 0 x2 0, तो इसका मतलब जो मेरा b बनेगा वो किससे बनेगा? A3 and A4 से। So can I not find my b, which will be nothing but b inverse b? Is it okay or not? Yes, ma'am. So that means now the method has slightly changed because I have just incorporated my knowledge of linear algebra and matrices here, and I am trying to solve everything with the help of matrices now. But अब इसमें भी you had four variables now and two equations. तो तुम्हारे पास ऐसे कितने ऑप्शंस आएंगे? Again 6. Those 6 will be your basic solutions. So what I want you to do is work on this, find all the basic solutions, identify which of them are basic feasible solutions. Basic feasible कौन सी होंगी? जिसमें हमारा variable non-negative होगा. Is that okay? Yes, ma'am. एक तो ये काम करना है. अब ये कल 9 से 10 के बीच का काम दे रही हूं मैं तुम्हें. कल ट्यूटोरियल है ना हमारा, ठीक है? एक तो ये काम करना है. दूसरा, जो दूसरी एक्सरसाइज आपको करनी है वो ये है कि जो हमने सबसे पहले ग्राफिकली सॉल्व किया था प्रॉब्लम, डू यू हैव इट राइट नाउ? सबसे पहले जिसमें हमने ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ ZB निकाला था. Do you have that problem? Because I don't have. I don't save it. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can anyone just read out the constraints? उसमें हमारे पास optimal Z आया था, feasible region closed आया था ना उसमें. Yes, ma'am. So can anyone just read out the constraints? 2x1 plus 3x2 less than equals to 180. Okay. x1 is less than equals to 60. x2 is less than equals to 40.
बाकी उसमें नॉन नेगेटिविटी वो रेस्ट्रिक्शन बाकी दैट इज तो एक्स हाँ, x1 x2 मोर देन और इक्वल टू Zero. 0। ठीक है, अब इसी को ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं इक्वेशंस में बाय एडिंग दी स्लैक वेरिएबल्स। x1 plus x4 equal to 60 and x2 plus x5 equal to 40। ये इक्वेशंस बन गई हमारी। ठीक है, यस मैम। अब इसमें भी निकालो सारी बेसिक feasible solutions। ठीक है, find all the basic feasible solutions here and find all the basic feasible solutions for this problem also. Is this okay? ओके मैम। बहुत बड़ा काम Yes, ma'am. नहीं है।